Okay, hello and welcome to everyone. This is our series Mutual Fund Distributor NISM VA Mutual Fund Distributor exam, and this is our second video for the second chapter of this Mutual Fund Distributor exam. If you didn't watch our last video, which we make for the Mutual Fund Distributor exam का जो first chapter है, we make the video of the first chapter, and उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से जो बेसिक्स कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का होता है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, इन्वेस्टमेंट दुनिया का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, we explain all the things. So if you didn't watch till now, please watch it and clear the concept, and that is very very important chapter for you because वहाँ पर साइकोलॉजी से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है. So you have to prepare for this questions. और मैं होप करता हूँ कि आप सभी ने उससे डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन बैंक था उससे अपने क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट था, यू गाइस ऑलरेडी अपेयर फॉर द एग्जाम, अपेयर फॉर द मॉक टेस्ट एंड अपने अच्छा स्कोर किया होगा. चलो तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लुक, today's video we are going to discuss the module 2, and in this module 2 you will understand how the mutual fund works, what are the investment asset classes are there, not the asset classes we already covered, what the schemes available, the equity scheme, the debt scheme, the hybrid scheme, all other things, and side by side the growth of the mutual fund industry. Okay, if you look for the PPT, just look, this is the chapter name is that concept and role of a mutual fund, right? And what are the things we are going to study in this particular chapter is concept and role of mutual funds, classification of mutual funds, and growth of mutual fund industry in India, right? So let's start with the first topic, that is what is mutual fund. At first, if you know what is mutual fund, please comment it down. If don't know, let's know what is that. Look, a mutual fund is a professionally managed pooled investment vehicle. What does it mean? म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक प्रोफेशनली मैनेज, जो प्रोफेशनल लोग है, लिंक्स द फंड मैनेजर्स, रिसर्च एनालिस्ट, ये लोग जैसे लोग है, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोला जाता है. तो ये सब लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और म्यूचुअल फंड स्कीम को ये लोग चलाते हैं, एंड दैट इज अ प्रोफेशनल वे. सो इट्स अ प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट व्हीकल. Okay, when you ride a bus there is a professional driver, right? So in the mutual fund also there is a professional fund, professionals are there who run the mutual funds. Okay, it allows multiple investors to pool money together. What it's allowed that, okay, let's understand this like this way. In your home you have the piggy bank, and this piggy bank your mom, dad, father, sister, your other relatives put some money every day or twice a month or once a week or whenever they want. And whenever you need something, you want to buy something or you have the emergency something, so what you did, you broke the piggy bank and collect the money and use the money for you whatever you need, right? So it's the same way the mutual fund works. Mutual fund क्या करता है, बहुत सारे लोगों के पास जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, अपने अपना खुद का पैसा था. आप लोगों ने एक चीज सुना होगा कि आप लोगों ने शायद जाना भी होगा कि पार्टनरशिप बिजनेस होता है, राइट? उसमें क्या होता है, कुछ पार्टनर्स आते हैं, 4 5 2 3 6 7 जितना भी होता है वो आते हैं, अपना पैसा देता है और साथ में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. सेम म्यूचुअल फंड में भी होता है. व्हाट इज देयर इन म्यूचुअल फंड, इन म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे लोग आते हैं और अपना पैसा देता है, और वो पैसा देता है किनको, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम को, जिनको बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बड़ा टीम है उसमें, इंडस्ट्री के पास उन लोगों का इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज है, बहुत सारे चीज है, उन लोगों का पैसा देता है और वो लोग क्या करते हैं, फंड में इन्वेस्ट करते हैं. someone saying that I buy a mutual fund, I invest in a mutual fund. No, you didn't invest in a mutual fund. Investment is a different thing and mutual fund is a different thing. You invest in stocks, bonds or money market instrument, other instrument via mutual fund. Actually you are not investing in the stocks, actually you are not investing in the mutual fund, actually you are investing on the stocks, but by the through of mutual fund. तो म्यूचुअल फंड एक जरिया है जिससे आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है उसे शुरू कर सकते हो. आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में और डेरिवेटिव्स में. एंड यू कैन आस्क मी दैट I have the option to go for the mutual fund, I have the option to go for the stocks and bonds for directly, then why I go for the mutual fund, right? You have the question. What will happen that if you're going for the direct, you have to acquire a lot of knowledge, you have to research a lot of things,
But in the same time, if you go with a mutual fund with a less research, less knowledge, you can invest your money into that and in a better way and better. बहुत सारा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का, हम जाके आगे जाके इसका बेनिफिट्स पे हम पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखोगे म्यूचुअल फंड का बहुत बेनिफिट्स है. आप अगर खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप अगर म्यूचुअल फंड में भी जाते हो, खुद से इन्वेस्टमेंट करना और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में अगर आप बोलोगे आपके पास उतना एक्सपर्टीज नहीं है, then go with the mutual fund because इसमें बहुत एडवांटेज है. मैं आगे जाके आप लोगों को सब दिखाऊंगा. सेकंड लाइन इसने क्या बोला है, the full funds are invested in diversified asset such as stock, bond and other instruments. किन किन चीजों में इन्वेस्ट करता है? नहीं, stocks, bonds and other instrument. other instrument में क्या क्या चीज आता है? Like there is gold, silver, commodities, there is our ETFs में आ जाता है, सेक्टर स्पेसिफिक्स. अभी तो बहुत सारे फंड हो चुके हैं, तो बहुत सारी चीज होता है, ठीक है, अदर्स में, और सभी आज ही हम कवर करने वाले हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड प्रोवाइड स्मॉल इन्वेस्टर एक्सेस टू द प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एंड मोस्ट बेस्ट एडवांटेज ऑफ अ म्यूचुअल फंड. इफ यू हैव 1 lakh rupee to invest, you cannot acquire a fund manager. If you have 2 lakhs, if you have 10 lakhs, if enough, you have 1 crore, you cannot, and you cannot go through with a professional fund manager with by your alone. You cannot start your investment with a hedge fund. You cannot start your investment with other professional जो भी सर्विस होता है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, फैमिली ऑफिसेस होता है, बहुत सारा ऐसी चीज होता है, तो उसमें आप डायरेक्ट इतना 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख में नहीं जा सकते. म्यूचुअल फंड में सुविधा क्या है, आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट योर SIP विद जस्ट 100 रुपीज, राइट. आपने बोले एड सुना ही होगा, बहुत सारे बहुत पॉपुलर ये एड कि 100 रुपये में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए. सो कॉमन जो पीपल है उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट चीज है, क्योंकि आप लोग वहां पे जस्ट 100 रुपए में अपना इन्वेस्टमेंट का जो भी जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो. दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स. द ऑफर the offers benefits diversification that might not be possible individual. Yes, that is what I am asking. You are spending, you have the 100 rupees and you are going to invest in a stock, mutual fund or anywhere. If you go for the stocks, you can buy the 100 rupees. How many stocks you can buy? If a stock price is 50, you can buy 2 stocks. You cannot do other. But with the 100 rupees, if you invest in the mutual fund, that money goes to the various stocks, because there is a lot of stocks has the portfolio in the mutual funds portfolio. मतलब म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होता है उसमें बहुत सारे स्टॉक है. अगर आप 100 रुपए डाल रहे हो तो 100 रुपया प्रोपोर्शनेटली उन सभी स्टॉक्स में जा रहा है. तो ये बहुत अच्छा चीज होता है म्यूचुअल फंड का कि आपको इससे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और भी बहुत अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है. इफ यू हैव द स्मॉल अमाउंट, यू कैन नॉट डू द डाइवर्सिफिकेशन. आप you cannot do the diversification with 1000, 100, 20,000, 50,000. Okay, then you have to look. If you want to make investment in the gold, if you want to make an investment in various sector, you cannot do with 100 rupees, right? 100 रुपए क्या क्या खरीद लोगे? ज्यादा से ज्यादा you can buy a one stock of a particular company, a small cap company, right? But in the 100 rupees, in the investing in a mutual fund large cap, you can buy the Reliance stock, you can buy the Tata stock, but practically if you go for it direct, you go with yourself, you cannot buy this. So यहाँ पर म्यूचुअल फंड का बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है ये चीज, राइट. मैं आप लोगों को नोट्स भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट. लेट मी मेक मी स्मॉल. Yeah, I think screen is visible. Look. A mutual fund has a professionally managed investment vehicle. Practically, one does not invest in mutual fund but invest through mutual funds. Means मैंने जो बोला था, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. You are investing stocks or bonds through mutual fund. Mutual fund is not an investment. You are investing in the equity market, capital market, money market by the mutual fund. The vehicle is a mutual fund. You are reaching your destination through the bus. The bus is the mutual fund. Okay. However, we hear of investing in mutual fund, investing in mutual fund schemes.
सो दिस इज द थिंग्स, ये जो भी पीडीएफ में दिखा रहा हूँ ये सबको आपको मिल जाएगा नोट्स में, मैं आगे जाकर के आपको दिखा दूंगा। मैं जस्ट इसको साइड कर लेता हूँ थोड़ा एंड वी विल मेक दिस ओके। So I think you will understand what is the mutual fund, what is not. If you didn't understood, please comment it down. We'll make a detailed video what is mutual fund, how the mechanism is work. Okay. Now for the second slide, look, that is the chart. You will understand by this only. Look, there is an investor, 1, 2, and 3, and 3 things that we want to invest something. So what he have done, they collect their money. Let's simplify that. Each one has 100, 100, 100, total 300, and the 300 they give to the fund manager. Then fund manager, what he does with this 30, with this 300 rupees, he buys securities. Security means stocks, bonds, जो भी आप बोलते हो आपका जो इक्विटी मार्केट में हो उन सबको सिक्योरिटीज बोला जाता है, ठीक है। So they buy securities and they generate a return. With this investment of 300, we are considering that after 1 year they generate a return of let's say 350, means 50 का return आया है. So what he will then this return amount and the principal amount will get back to the investor. ओके, इन्वेस्टर। पर म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं होता। दिस इज जस्ट एग्जांपल आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस साइकिल को अच्छे से देख लो। इन्वेस्टर से पैसा जा रहा है फंड मैनेजर बाई कर रहा है सिक्योरिटीज, देन सिक्योरिटीज से आपको आ रहा है रिटर्न, एंड द रिटर्न एंड प्रिंसिपल द 300 रुपीज एंड द 50 रुपीज देन अगेन कम बैक टू इन्वेस्टर। ओके, म्यूचुअल फंड में आपको डायरेक्ट आप ऐसे नहीं दे सकते, पर वो पर आपको यूनिट होता है उसका एप्रिसिएशन आएगा, यूनिट में आपका एप्रिसिएशन आएगा। So this is what mutual fund, and this is how by this chart you can understand the mutual fund, how that works. Okay, next see this, what I said, a common misconception is that mutual funds compete with instrument like equity, shares or bonds. The reality is you invest through a mutual fund scheme, not in one. It's a different way of investing, not a different product. A mutual fund is a trust. Okay, let's see, मैंने जो बोला म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब यू आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन द म्यूचुअल फंड, यू आर इन्वेस्टिंग इन stocks, equity and bonds, and the stocks is not just for the only one company or not only 2 companies, not only 3, it is more than 50, 60, 70. You are investing also gold, you are investing also various things. If you go with the mutual funds, if you're looking for any mutual fund scheme, you will find what is the portfolio. If you look for a portfolio, you will find that various type of stocks is there. There is large cap stocks, there is small cap stocks. Okay, it's a mutual fund is a trust that pulls money from the investor to purchase a portfolio of securities, equity bonds. Another most important thing, and this is the most important question for you and your friends and all who are preparing for this exam, that mutual fund जो होता है ना वो ट्रस्ट के जरिया बना जाता है। म्यूचुअल फंड इज नॉट अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स अ ट्रस्ट। ओके, दैट्स अ ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड जो होता है वो ट्रस्ट एक्ट, इंडिया का जो ट्रस्ट एक्ट है, बाय द हेल्प ऑफ द ट्रस्ट एक्ट म्यूचुअल फंड बनाया जाता है। हम लोग म्यूचुअल फंड का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ये इन द चैप्टर 3 वी हैव द म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर, उसमें हम देखेंगे हाउ द म्यूचुअल फंड्स हाउसेस, हाउ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर रनिंग एंड हाउ दे आर मेकिंग। तो उसमें अगर सबसे पहले आप देख सकते हैं ये चीज। And if you look for this, the reality is you invest. Okay, this is done. Okay, a mutual fund is a trust that pulls money from investor to purchase portfolio and securities. Okay, तो mutual fund is a trust. ये चीज आपको अपने दिमाग में घुसा लेना है, and I am sure that in the exam you will find some question from there. Next is that the vehicle is built on 3 pillars. In the mutual fund, there is a 3 pillars. One is the professional management. The professional management is that the fund managers, the management team, who are the managing your money, that is the professional management. This is the portfolio diversification. What I am saying that by the investing in mutual fund, you are not investing in the only one stock. You are investing in multiple stock, multiple bonds, multiple asset, multiple commodities. So automatically the diversification happen and your risk is reduced. This is the second pillar. And the third pillar is the regulated protection, the SEBI. Look, SEBI is a guy, SEBI is an organization who always work for the retail investor. Retail मतलब हम लोगों के जैसे जो भी इन्वेस्टर होगा उनके लिए SEBI हमेशा काम करता है, not for the bigger investors.
सेबी वहां पर डील दे सकता है, पर आप लोगों के जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए कभी नहीं देगा. तो सेबी इज ऑलवेज ट्राइंग टू सेफ प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर. तो म्यूचुअल फंड में बहुत ट्रांसपेरेंट है एंड म्यूचुअल में से हाई ट्रांसपेरेंसी fund. If anyone is asking that what is most transparency between bank FD or mutual fund, I will say mutual fund. In the mutual fund, you can track where your money goes, but in the bank FD, you cannot. So mutual fund is very, very, very transparency. Transparent. Mutual fund is very, very highly transparent. Okay. So we'll look for the next slide. Okay. There is a two role of the mutual fund. One is the investor. What is the role for the investor of mutual fund? Helps investor earn income and build wealth by accessing security markets. Offers a wide variety of schemes structured to meet diverse investor needs for safety, liquidity, and requirement and return. Sorry. So what he says, investor के लिए म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा एक रोल होता है. That is his primary role. What does this mean? By the mutual fund, whenever you are investing in a mutual fund, a common people can invest in mutual fund. Those who have a zero knowledge of the stock market, those who have a zero knowledge of the money market, those who have zero knowledge of the economy, they can also invest in mutual fund and generate a return. And if you look for any mutual fund scheme return, and the long term, they are not a negative return. In the long term, all the mutual funds are positive, mostly. Okay, mostly mutual funds are the positive sidely. So, and it will help if you be systematic with the mutual fund. If you look for there is various plan of making wealth. If you look for that, you can search only on the Google, and there is various formula like rule number 75, 74, 143. There is various formula by where you can really make some wealth by the time. You have to invest your money and your time, age. Okay, age and time in mutual fund gives you a wealth, and wealth means a lump sum, big lump sum. And in the mutual fund, what has happened? There is a compounding effect happened. So by the time, the more time you invested with the mutual fund, you will generate more return. So this is what happened in the mutual fund. Second is the for economic, by the capital formation. Number is the capital formation. Channels public savings into productive projects for companies and governments, market stability. Look, if you park your money in your savings account, right? You have 1 lakh, you parked your money into the savings account, and bank have the liability. Whenever you want that money, bank have to pay you. But if you invest in mutual fund, the investment go to the projected productive projects. Like by that money, mutual fund will buy some stocks, some bonds, some debentures, and that money go to the economics. And whenever the money goes to the economy, that will create some job. That will create some job. आप लोग साइंस नहीं समझोगे. Okay, I will explain you in very good way. Like अपने एक म्यूचुअल फंड में अपने एक इन्वेस्ट किया, तो उस इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड क्या करेगा? एक कंपनी जिसको लोन चाहिए उसको लोन दे देगा, उसके बदले में क्या मिलेगा? म्यूचुअल फंड को इंटरेस्ट मिलेगा. और वो कंपनी क्या कर रहा है? उस लोन से जाके क्या करेगा? उस लोन से जाके अपना कैपेक्स करेगा. कैपेक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर, न्यू फैक्ट्री बनाएगा, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा. And whenever they are doing this, they will hire some people. If they hire some people, they are paying something for. They will pay some money to their employees. They will create some more jobs, and that's the way they make a cycle. That's the way they make a cycle, and that cycle will help to boost our economy and the formation of the capitality. Next time, उसने ऐसे ही बोला है कि economy multiplier. If you look for the third point, there is economic multiplier. So this is how the mutual fund helps. And then another is the market stability. Act as a crucial counterforce to volatile foreign portfolio investor flows, as seen in 2022 when mutual fund inflows absorbed heavy FPI selling. What is happening that if you look today also, the FPIs are the foreign portfolio investors are going out from India. They are viewing that India is not an attractive way for them to invest in India. So what they are doing, they are taking back their money and investing in China, Japan and other Asian countries. So इस टाइम पे जब भी वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या, तो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है. जब भी वो लोग पैसा खींचेगा तो मार्केट ऑटोमेटिकली डाउन होगा.
डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो लोग पैसा खींच रहे हैं, वो लोग सेल कर रहे हैं। सेल मतलब सप्लाई, जो मार्केट स्टॉक्स जो भी होगा उसका सप्लाई बढ़ जाएगा, राइट। इफ द सप्लाई इज इंक्रीजिंग द डिमांड विल फॉल, एंड उस टाइम पे अगर डिमांड फॉल होगा तो मार्केट भी फॉल होगा। तो उस टाइम में म्यूचुअल फंड क्या करता है, उस सभी चीज खरीद लेता है और जो डिमांड है उसको फिर से हाई कर देता है और मार्केट उससे सही हो जाता है। तो दिस इज हाउ दे फिक्स द मार्केट, क्या बोलते हैं उसको, दे फिक्स द मार्केट एंड दे मेंटेन अ स्टेबिलिटी इन द मार्केट। एंड इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो हुआ था रिटेल इन्वेस्टर, they are also happy with that. The government also happy. The normal people, you are also affected by the stock market. So mutual fund is a very good vehicle. Institutional investor जो भी होता है mutual fund, they are the big thing. And if you delete mutual fund from our economy, the economy will collapse. Okay, next is know your vehicle, the core metrics. Okay, there is some things like in the mutual fund, there is something that is units, net asset value, asset under management, आपका recording expense and unit capital. We are going to one by one. At first, what is the units? Okay, whenever you are buying a mutual fund, you are not buying directly, you are not buying a stocks, you are not buying a bond, you are not buying a gold, you are not buying a asset class, right? So what you will buy, you are buying a unit. So let's say why I am going to buy unit. Suppose you have 100 rupees. By the 100 rupees, how much can you buy in a portfolio? Very less, right? So what they did, there is a formula. There is a formula of unit calculation. We will teach you later in this later chapters. That tells us your proportional ownership in the schemes portfolio. Each unit typically has a face value. Means let's think like a cake. Okay, you have the big cake and the cake is divided into 4 slides, and each one slide is we are calling as a unit. Means 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. The cake has total 4 unit. Okay, this is how the unit is happening. And in the market, in the stock market, the unit means like you have invested 10,000 rupees, and the NAV, the net asset value, NAV we are going to discuss after this only. So NAV value is rupees 10. So 10 minus 1000. How much? What is the number? 1000. You will get 1000 unit of a mutual fund. Unit means how much proportionate way of the total portfolio you have. You invest 1000. The net asset value is 10. You get 1000 units. Whatever you get, that is 1000. So in a particular mutual fund, from the total portfolio, you are owning 1000 unit of that mutual fund. Unit says that your quantity or your ownership in the particular mutual fund. Okay, whenever you are buying something in a mutual fund, that you will buy a form of unit. आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा ना, आप समझ लो आपने इन्वेस्ट किया होगा 100 रुपए, और 100 रुपए में आप बहुत सारी चीज तो नहीं कर सकते हो। तो 100 रुपए में क्या करना है, म्यूचुअल फंड आपको वही 100 रुपए अलग अलग एसेट में प्रोपोर्शनलिटी में उसको डिवाइड कर देगा, राइट। वो प्रोपोर्शनल वेट्स में उसको डिवाइड कर देगा। अब म्यूचुअल फंड क्या करेगा, उसके बदले में आपको यूनिट देगा। इज द नेट एसेट वैल्यू। व्हाट इज द नेट एसेट वैल्यू? दैट इज द टोटल एसेट minus the total liability. Means the true worth or market value per unit calculated by using mark to mark valuation all securities in the portfolio. Okay, suppose you invested a mutual fund named A mutual fund. So the A mutual fund has 1 lakh asset and 2 lakh debts or 2 lakh liability. So what will be there? So what will be their net asset value? Net asset value 1 lakh minus 20,000, 80,000 is the net asset value. और इसको कैलकुलेशन कैसे होता है? एसेट का कैलकुलेशन मार्क टू मार्क वैल्यूएशन, मार्क टू मार्क वैल्यूएशन। व्हाट डज इट मीन? मार्क मीन्स आज जो मार्केट में चल रहा है, जिसका प्राइस आज जो है, आज रिलायंस का प्राइस 1000 है, तो आज कैलकुलेशन होगा 1000 रुपए में। अगर कल को रिलायंस का प्राइस हो जाएगा 2000 में, देन आपका पोर्टफोलियो का एसेट साइड का कैलकुलेशन होगा 2000 के बेसिस के ऊपर। ओके, तो दिस इज व्हाट मार्क टू मार्केट मींस। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है
उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा, उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन होगा. दिस इज व्हाट कॉल्ड मार्क टू मार्क प्रोसेस. एंड व्हाट इज एनएवी? assets, total assets minus total liability. It says how much one unit of a mutual fund is worth on a particular day. Means in this previous example we says that we invest 10,000 and that day the NAV is 10. So what is the unit there? 1,000, and 10,000 is the NAV. Means the 10 is the NAV tells you that how much unit of a mutual fund is worth on a particular day. Means आज का डेट है, मान लो आज 5 तारीख है, इस दिन का म्यूचुअल फंड में कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटीज है, उन दिनों का कैलकुलेशन होगा. एसेट टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, उसमें जो मिलेगा दैट इज द नेट एसेट वैल्यू. एंड इफ यू डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ यूनिट होल्डर इन अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, देन यू विल गेट अ NAV, net asset value. And if you are buying a mutual fund from any website, the money you are paying for the one unit, that is NAV. The money you are paying for the one unit, that is NAV. Total, the money you are paying for the one unit, that is NAV, the net asset value. If you look for this, look for there, the true worth of a market value per unit. Means एक यूनिट का कितना वैल्यू है, एक यूनिट का कितना वैल्यू है वो आपको नैप बताता है. नैप कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी बाय द नंबर ऑफ इन्वेस्टर. क्लियर? सो दैट इज वाज नेट एसेट वैल्यू. दिस इज द एसेट अंडर मैनेजमेंट. एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब how much money the AUA, how much money the AMC are managing. Means your friend gives 100, you gives 100, your another friend gives 100, and your another friend gives another 100. So company is now managing 300. So what is the asset management? Asset under management, that is 300. What is the AUM? That is 300. इसका जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी है वो है नेट एसेट वैल्यू इनटू टोटल यूनिट्स. इस सब से भी पता लग सकता हो. This is the most easiest formula for the because in a mutual fund you didn't know how much people investing. So what you can do, NAV, if your NAV is 10 into total units is 1,000. 10 into 1,000 means 10,000 का आपका यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका जो फॉर्मुलेशन का कैलकुलेशन होता है वो एग्जाम में आता है. एक है नेट एसेट वैल्यू, एक एसेट अंडर मैनेजमेंट का, और यूनिट कैपिटल एक्सपेंस रेशियो. ये सब बाद में आएगा आपको और डिटेल में. दिस इज फॉर द बेसिक थिंग. This is the recurring expense. Recurring expense means the annual cost management charge. मैंने बोला था वो पे आपको याद होगा अगर 2% मैनेजमेंट विल चार्ज फॉर द प्रोफेशनल सर्विस. जो परसेंट चार्ज करेगा मैनेजमेंट आपको जो सर्विस दे रहा है उसके लिए, दैट इज अ रिकरिंग एक्सपेंस. ओके, इफ अ मैनेजमेंट इज चार्जेड 2% on 2%, so your investment size is 100, then they will deduct 2 rupees. They will deduct 2 rupees. That is the charge. Next is the unit capital. So unit capital का मतलब क्या है? Total value of units issued by a mutual fund. Means if you have 10 lakh units and NAV is the 10, means 10 lakh into 10 is the 1 crore is the unit capital. अब आप लोग बोलोगे तो ये म्यूचुअल फंड का जो AUM है और म्यूचुअल फंड का जो यूनिट कैपिटल है बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. इसका बहुत सिंपल सा जो बोलता है डिफरेंस है वो है कि unit capital is the total value of unit issued by the mutual fund. That is the total value of unit is issued by a mutual fund. And the AUM is total market value of all asset managed by the mutual fund. Means total जो आज का दिन का जो market value है वो जो manage कर रहा है mutual fund, that is the total AUM size for today. And if you look for the unit capital, the total value of units issued by the mutual funds. Means if 10 lakh units and the face value of NAV of 10, then the total size of the unit capital is 1 crore rupee. Okay, understood? If you didn't, please comment it down. Okay, that's the benefits and features of professionally managed mutual funds. That is professional management. I already discussed that you will get an expert research selections and administration at very low cost. That is a very minimal charge. If you looking for the mutual fund का जो expense होता है आपको
पता भी नहीं चलेगा कितना म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन का म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है जो एएमसी है कितना चार्ज कर रहा है एनुअली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बहुत मिनिमल होता है, बहुत मिनिमल। एंड देन इज द अफोर्डेबल डाइवर्सिफिकेशन, आपको बहुत सारे वेज में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है इन स्मॉल वेरी स्मॉल मनी। यू विल गेट द डाइवर्सिफिकेशन बाय इन्वेस्टिंग ओनली 100। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया वो सब। देन इज द इकोनॉमिक ऑफ स्केल, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, रिसर्च कॉस्ट होता है। आप ऐसे समझो, आप अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपने एक रिसर्च एनालिस्ट हायर किया, ठीक है, तो रिसर्च एनालिस्ट हायर किया तो वो बोलेगा कि मैं 10 रुपए लूंगा एंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 100, तो 100 में से आपका कॉस्ट आ जाए कितना आ जाए 10। एंड नाउ यू आर थिंकिंग दैट ओके मैं और 10 लोगों को 10 और दोस्त को लाता हूँ और मैं उनको भी बोलता हूँ इन्वेस्ट करने में, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो रिसर्च का कॉस्ट है ना फिक्स्ड कॉस्ट है तो 10 ही आएगा। जो रिसर्च एनालिस्ट जो कॉस्ट लेगा तो 10 ही आएगा। और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, मतलब आप सेम चीज कर पाओगे विद द स्मॉल रुपी इन्वेस्टेड। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा ही होता है, आपको इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिल जाता है। देयर इज अ हाई लिक्विडिटी whenever you want, at if you think that I will withdraw money right now at 12 p.m. and 1 p.m. within t plus 1 का सेटलमेंट पीरियड है, उसमें आपको मनी मिल जाएगा। अगर कि बैंक का जो एफडी है वहां पर नहीं होता है सर। is the transparency, this is regulated by SEBI. There is a high transparency. Mutual fund also regulated by AMFI. AMFI is the Association of Mutual Fund. So उसमें भी आपको बहुत अच्छा सा एक मिल जाता है कि ट्रांसपेरेंसी। सो यहाँ पर म्यूचुअल फंड पे स्कैम नहीं होता। इफ यू लुकिंग फॉर द हिस्ट्री ऑफ द म्यूचुअल फंड यू विल फाइंड बहुत मिनिमल सा स्कैम है, और कुछ भी हुआ भी होगा अगर नहीं है, मेरे जो नॉलेज है उसमें तो नहीं है, अगर हुआ भी होगा सेबी ने उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है एंड देयर इज अ हाई ट्रांसपेरेंसी। There's a systematic investing. If you are making a systematic SIP, systematic SW means systematic withdrawal plan, means एक टाइम के बाद आप अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो आप क्या कर सकते हो, मंथली 1000 10,000 15,000 आपका जो भी अमाउंट है उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग अ लंप सम एंड इफ यू इन्वेस्ट इन 1 crore and if you are taking back 50,000 per month, you will see actually your money is growing. You are getting money back, but the money is also growing. So that is what happens in the SWKP case. Also there is SIP, there's STP, systematic transfer plan, means एक टाइम के बाद आपका, अगर मैंने पहले जो हमारा जो वीडियो था फर्स्ट चैप्टर में भी ऑलरेडी डिस्कस था, एज के हिसाब से आपका रिस्क होता है, राइट। सो यू थिंक दैट एट द एज ऑफ 50 आई एम इन्वेस्टिंग ऑन इक्विटी, इट्स गुड, बट आफ्टर दैट आई विल स्विच टू डेट। सो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका जो मनी होगा 40 के बाद ऑटोमेटिक और डेट स्कीम में चला जाएगा। दिस इज व्हाट एसटीपी, ये सब भी कम करता है। उसके बाद टैक्स एफिशिएंसी है। सो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का सेक्शन 80C है, जो हमारा इंडियन टैक्स एक्ट 18C, वहां पर आता है ELSS स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें अगर यू आर इन्वेस्टिंग मनी, इसमें मनी क्या होता है 3 साल के लिए लॉक इन होता है, और उससे आप मनी नहीं ले सकते इफ इट इज नॉट ट्रेडेबल ऑन द सेकेंडरी मार्केट। उसमें आप मनी नहीं ले सकते, उसमें से मनी बैक नहीं कर सकते, मनी विड्रॉ नहीं कर सकते 3 साल के लिए, उसमें लॉक हो जाता है। सो यू विल गेट अ टैक्स सेक्शन का वहां पर एक बेनिफिट मिलता है, अच्छा खासा मिल जाता है, 1 लाख तक साइन मिल जाता है। That's the regulatory comfort. Of course, there is a SEBI, AMFI. So this is highly regulated sector. This is the benefits of the mutual fund. If you look for this slide, there is the one thing is the economic of scale and the systematic investment में जो भी बताया STP, SIP and SW, that is very important as perspective for your exam. Next, if you look for the next slide, that is the what is the problem. Everything has a one side, one advantage and one disadvantage. So in the mutual fund also some disadvantage. As an investor, as a distributor, whenever you are going to teach your client, you have to specify the disadvantage also. नहीं तो वो लोग क्या करेगा, सेबी आपको कंप्लेंट करेगा और सेबी आपको देख लेगा। भाई सेबी बहुत ट्रांसपेरेंस होता है इन सबके मामले में। इफ यू चीट विद द रियल रिटेल इन्वेस्टर, सेबी विल पुट इन द हेल। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर। लॉक ऑफ portfolio customization means you can choose where you're going to invest. You are choosing that I am going to invest in equity schemes, but you cannot pick up the right stock that you want. You want to invest in Tata stock, but you cannot choose by that own. The choice is depend on the fund manager and professional team. So that is a lack of portfolio customization यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। Next, the choice overload. What will happen if you look for the mutual funds? There is
47 AMCs, and the 47 AMCs, every AMC has more than 50, 60, 70, 80 schemes. ओके, 50, 60, 80 स्कीम में ऊपर थ्री डिविडेशन होता है. एक ग्रोथ प्लान होता है उसमें, एक होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, एक होता है डिविडेंड पे आउट इन्वेस्टमेंट. सो दैट इज अ ह्यूज नंबर ऑफ स्कीम. उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है, इसके लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का आपका काम है कि आपको इन्वेस्टर को समझाओ, आपका जो क्लाइंट है उनको समझाओ, देन यू हैव टू रेफर द राइट स्कीम फॉर यू. So that is what happened there. The choice overload. There is a huge choice, so automatically the retail investor will be confused. There is a no control over cost. While SEBI impose limits, individual investor cannot control the recurring expense charged to the scheme. SEBI has the upper cap for the cost, means you cannot charge more than 2%. बट वो 2% में कितना आएगा, 0.1% आएगा, 0.5%, 0.6%, 0.2%. द रिटेल इन्वेस्टमेंट कैन नॉट कंट्रोल दैट. द कॉस्ट कैन नॉट बी कंट्रोल और डन बाय द रिटेल इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड, विच यू कैन डन इन द हेज फंड, इन द अदर्स जो भी होता है प्रोफेशनली मैनेज फंड, उसमें आप कर सकते हो, पर यहाँ पर आप वो चीज नहीं कर सकते. देयर इज अ नो गारंटेड रिटर्न. म्यूचुअल फंड इज नॉट गिविंग यू द गारंटी टू pay the principal amount and plus the interest amount. In the FD, you will get the 100% assurity that you will get your principal back. But in the mutual fund, there is a no guarantee. If the market will fall, they have the no guarantee. They have no liability obligation to pay back your money to you. So that is what happened in the mutual fund. So these four are the most common आपका जो बोल सकते हो मैं यहाँ पर मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड का. इसमें और एक चीज आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो होता है कि चॉइस ओवरलोड एंड द कॉस्ट. यहाँ पर एक चीज मैं बताऊंगा, आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर पढ़ना है, कौन से म्यूचुअल फंड में कितना % का कॉस्ट जाता है, कौन से म्यूचुअल फंड में, बिकॉज कॉस्ट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. इंडेक्स फंड एंड पैसिव फंड्स, एक्टिव फंड्स, बेस्ड ऑन दैट इक्विटी, डेट, इन सब का बेस में जो होता है, तो उसमें कॉस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज डिफरेंट. कहां पर भी 1% होगा, कहां पर 2% होगा. ओके, सो यू हैव टू चेक दैट एंड यू हैव टू आपको ये चीज रखना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस. ये चीज आपको रखना पड़ेगा. देन इज लुक, दिस इज मोस्ट वाइटल स्लाइड, categorization of mutual fund. Here we categorize the mutual fund in 4 ways. One is equity scheme, debt schemes, hybrid scheme, solution oriented, and other scheme. Equity schemes means the company are investing your money to the stocks, to the equity. Equity market means stock market. To the equity means the stock. They are buying stocks, ownership of a company. They are dealing in the secondary market or primary market. Those mutual funds are dealing in the primary, secondary market buying stocks, equities. That are the equity schemes. सही है. डेप्ट स्कीम. डेप्ट स्कीम्स मींस क्या होता है ना, कंपनी, गवर्नमेंट, ये सब के पास ये सब लोन लेता है, और जनता के पास लोन लेता है, और गवर्नमेंट के पास भी, और दूसरे जो इन्वेस्टर है होता है उन सब से भी ये लोग लोन लेता है. तो डेप्ट स्कीम्स का जो भी म्यूचुअल फंड है वो क्या करेगा कि इस डेप्ट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करेगा. डेप्ट आइटम्स में, डेप्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा. इसमें होता है कॉर्पोरेट का जो लोन लेता है, कॉर्पोरेट लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकता है. गवर्नमेंट लोन लेता है जिसे बॉन्ड बोलते हैं हम उसको, वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट करेगा. तो ऐसे वेरियस टाइप का डेब्ट होता है. इसमें रिस्क कम होता है क्वालिफाइड टू इक्विटी स्कीम. सो इसमें भी रिस्क होता है पर लोअर देन द इक्विटी, बिकॉज देयर इज अ गारंटी टू गेट द मनी, बट दे कैन फेल. नेक्स्ट इज द हाइब्रिड स्कीम. इफ यू लुक फॉर द हाइब्रिड स्कीम होता है इक्विटी एंड डेब्ट का मिक्सचर होता है. इसमें बहुत सारा होता है, कंजर्वेटिव, बैलेंस, एग्रेसिव. इसमें प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है कि कंजर्वेटिव में आपका कम होगा तो आपका कम इक्विटी में होगा, डेब्ट में ज्यादा होगा. हाइब्रिड पे बैलेंस में 50-50 होगा, एग्रेसिव में आपका हो जाएगा उसमें 80% इक्विटी एंड 20% डेब्ट. तो ऐसे चेंज हो जाता है. देन इज अ सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम. सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में आ जाता है आपका रिटायरमेंट फंड एंड द चिल्ड्रन फंड. Retirement fund, those are going for the retirement, they can invest into that. There has some lock-in period. In the children scheme also there is a lock-in period of 5 years. तो ये सब उसका स्कीम होता है. अदर होता है इंडेक्स फंड, ETF फंड और इंटरनेशनल फंड. इंडेक्स फंड क्या करता है कि आपका जो भी इंडेक्स है ना, जैसे निफ्टी इज इंडेक्स,
Nifty 50 is an index, so they are investing on the index only. They are investing in the index. वो आपका अगर किसी कंपनी रिलायंस का अगर मार्केट में उसमें मार्केट का जो प्रोपोर्शनेट कैपिटलाइजेशन है उसका अगर रिलायंस में 0.50 है तो उसको 0.50 ट्रैक करना पड़ेगा. देन दे हैव टू इन्वेस्ट इनटू दैट. सो दिस इज द इंडेक्स फंड. एंड इंडेक्स फंड का मैं एक आपको बहुत अच्छा डेटा देना चाहूंगा. इफ यू लुकिंग फॉर द लास्ट 20 years data, this index funds, all the big 5 AMCs, SBI, HDFC, ICICI, they are giving the index fund category more than 12% return, not less than 12, and that is consistent. And index is going by 12%. That is the proof. And that is the international fund. International fund क्या करेगा कि बाहर का जो मार्केट है, लाइक यूएस का मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, आपका बाहर का जापान का मार्केट हो सकता है, चाइनीज का मार्केट हो सकता है, वहां पर जाकर आपका ये सब फंड वहां पर जाकर दे आर इन्वेस्टिंग ऑन द इंटरनेशनल फंड्स. ओके. एंड इफ आई गो फॉर द ओके इक्विटी स्कीम का मैं अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर देखो मल्टी कैप है. मल्टी कैप का आगे सबसे आगे मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं. व्हाट इज लार्ज कैप, व्हाट इज मिड कैप एंड व्हाट इज स्मॉल कैप. लार्ज कैप्स आर द कंपनीज हु हैव द मार्केट कैपिटलाइजेशन. द टॉप 100 कंपनीज जो हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप 100 कंपनीज है उनको बोला जाता है आपका लार्ज कैप. उसके नीचे जो है 101 से 205 तक वो सब है मिड कैप. एंड 205 के बाद में जो भी कंपनी होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन हिसाब से वो सभी हो जाएगा स्मॉल कैप. ओके. सो मल्टी कैप फंड क्या करता है? लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करता है. लार्ज कैप फंड टॉप 100 कंपनीज एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन. लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों में इन्वेस्टमेंट करेगा. मींस उसका जो होगा वो क्या बोलते हैं, उसका जो इंडेक्स होगा 250 250. Okay, this is the index. Flexi cap means they can invest in anywhere, mid, large, small. इसको प्रोपोर्शनल होता है. मिड कैप फंड हो जाएगा. उसके बाद स्मॉल कैप फंड, डिविडेंड डील, इसमें आपको डिविडेंड मिलेगा. ओके. वैल्यू फंड क्या करेगा कि अंडर वैल्यू स्टॉक जो होता है ना मार्केट में, लाइक अ कंपनी इज अंडर वैल्यूड, दे डिडंट गेट द राइट एक्सपोजर, सो दे विल फाइंड द स्टॉक एंड दे आर वेटिंग फॉर द टाइम व्हेन दे विल गेट द एक्सपोजर एंड आफ्टर दैट दे विल मेक अ प्रॉफिट. अंडर वैल्यू कंपनीज को खोजता है, जब उसका असली वैल्यू मिल जाता है देन मेक अ प्रॉफिट. दैट इज द वैल्यू फंड. एंड द फोकस्ड फंड, फोकस्ड और सेक्टर और थीमेटिक फंड द सेम फंड्स. इसमें क्या होता है कि ये लोग कुछ थीम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. फोकस आपको कैसे कर लो थीम्स में, लाइक देयर इज अ थीम ऑफ उसको क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी पे थीम में जो भी कंपनी होगा सेक्टर में, सोलर सेक्टर में जो भी कंपनी होगा, तो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू दैट. If a company is sector oriented, is they are going to invest on आपका क्या होगा IT सेक्टर, so they will buy the only IT सेक्टर. इसमें क्या जाता है कि आप एक only इंडस्ट्री पे डिपेंड कर रहे हो. If you are investing on the IT sector right now, the IT sector is down, so you are actually missing. But if you are investing in multiple funds, then automatically your fund will get diversified. That is another advantage. And that is ELSS. I already talked about that. इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इसमें आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है. 80% इन्वेस्टमेंट इसका इक्विटी में जाता है. एंड दैट इज देयर, इसमें आपका टैक्स का बेनिफिट मिलता है. राइट. देन डेट स्कीम, शॉर्ट टर्म फंड. शॉर्ट टर्म फंड ये मनी मार्केट और बैंक का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्रेजरी बिल्स, ये सब पे इन्वेस्टमेंट करता है. मीडियम टर्म फंड्स इसमें भी सेम है. इसमें बहुत सा चीज अच्छा है कि आप लोगों को क्या करना है, इसमें ड्यूरेशन से क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट टर्म फंड्स कौन से इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करता है, उनका ड्यूरेशन कितना है. फिक्स्ड 3 months, 12 months, 6 months to 1 month, 1 month to 3, 90 days तो यहाँ पर होता है. तो उस सबको आपको जगह एक बार रीड करना है. इफ यू लुक फॉर दैट, देयर इज गिल्ड फंड. गिल्ड फंड है गवर्नमेंट का जो फंड होता है, इसमें गिल्ड फंड बोला जाता है. ये 10 साल के लिए आता है. उस डिवेंचर में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं. दिस द कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड. कॉर्पोरेट जो लोन लेता है, उसमें जो कंपनी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, दैट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी लोन ले रहा है कोई कंपनी, सो दे आर इन्वेस्टिंग इनटू दैट. रोड बनने के लिए प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लोन ले रहा है, तो दैट विल आल्सो कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एंड द फंड इज इन्वेस्टिंग ऑन दैट, सो दैट इज आल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, फ्लोटिंग रेट फंड. फ्लोटिंग रेट फंड में कहता है यहाँ पर दे आर इन्वेस्टिंग दोस इंस्ट्रूमेंट, देयर इज नॉट फिक्स्ड रेट, द मार्केट इज वेरिंग. मींस एक बॉन्ड का प्राइस आज अगर मार्केट में 5 है, अगर कल को 7 हो जाएगा, 7% हो जाएगा, तो कंपनी को 7% रिटर्न मिलेगा.
इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, वी विल एक्सप्लेन यू लेटर वेरी डेप्थ। देयर इज डायनामिक बॉन्ड फंड, ये भी बहुत सारे, ये जो सब कुछ बॉन्ड है सब में इन्वेस्ट कर देगा। देन इज फिक्स मैच्योरिटी प्लान, दैट इज ऑल्सो सेम। देयर इज कैपिटल प्रोटेक्शन का ओरिएंटेड फंड, ये आपको कैपिटल प्रोटेक्शन देगा बाय इन्वेस्टिंग, इन्फ्लेशन को प्रोटेक्शन का इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। हाइब्रिड में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बैलेंस ये सब नॉर्मल है। आर्बिट्रेज फंड आपको अगर नहीं पता तो बोल दूं, आर्बिट्रेज का फंड क्या करता है, दे आर मींस देयर आर टू एक्सचेंजेस, वन इज NSE and one is BSE. If in the NSE a stock is trading on to 50 and that is trading on the BSE in the 40 rupees, what they will do, they buy from the BSE at 40 and they sell it to 50, सीधा सीधा 10 rupees का प्रॉफिट हो जाता है, इसको बोलता है आर्बिट्रेज फंड। So that is there in this slide. Let's move to next. Okay, that is the how can you divide the mutual fund, by the structure, by the management style, and by the investment. If anyone asks you what is the structure of the mutual fund and divide it and categorize it, तो आपको सबसे पहले एक चीज करना है, आपको क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड इस फंड, ये दोनों चीज में आपको सबसे पहले बोलना है, ठीक है। व्हाट इज ओपन एंडेड? ओपन एंडेड में होता है कि you can invest and anytime, you can withdraw your money at any time, means इसमें कुछ फिक्स्ड डेट नहीं होता। एट द पोस्ट NFO आप कभी भी जाके आपको आप इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर यू कैन बाय, इफ यू वांट टू सेल यू कैन सेल ऑल्सो, देयर इज एग्जिट लोट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दिस अ क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड क्या मतलब क्या होता है कि यू कैन ओनली परचेस एट NFO, उसके बाद उसमें एक लॉक इन पीरियड लग जाता है, आफ्टर द मैच्योरिटी यू विल गेट बैक योर मनी, ड्यूरिंग दिस नॉट। बट सेबी ने मैंडेट किया है क्लोज एंडेड जो भी फंड होगा दे हैव टू बी ट्रेडेड ऑन द मार्केट, उसके वजह से क्या मिल जाएगा, जो इन्वेस्टर है उनको थोड़ा बहुत लिक्विडिटी मिल जाएगा। देन इज द एक्टिवली मैनेज और पैसिव मैनेज बाय द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। एक्टिवली मैनेज मींस अ कंपनी और एक म्यूचुअल फंड वो क्या कर रहा है कि अपने खुद से रिसर्च से जाके एक स्टॉक पिक कर रहा है, लाइक वैल्यू फंड इज नॉट ट्रैकिंग एनी कंपनी, ठीक है, वो कोई इंडेक्स को फॉलो नहीं करता, वो कोई जो एक्टिवली मैनेजर वो कोई इंडेक्स को फॉलो नहीं करेगा, पर वो ट्राई करेगा कि इंडेक्स को बीट करने के लिए। वैल्यू फंड म्यूचुअल फंड में होता नहीं है। ऑल द फंड्स इफ यू आर सीइंग दैट इज अ पैसिव फंड इंडेक्स फंड, बिकॉज इफ यू लुक फॉर दैट देयर इज अ बेंचमार्क एंड द बेंचमार्क दे आर फॉलोइंग द पैसिव फंड एंड द इंडेक्स फंड। इंडेक्स पैसिव का जो भी होता है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, निफ्टी 250, निफ्टी 500, they are the index. So this company's funds are following that Sensex. That is the index fund. Index fund में क्या होता है कि if they saw that in the Nifty में top 50 कंपनी होता है, they said that Reliance at the proportion of 5%. So वो लोग क्या करें, उसका जो 5 फंड है उसमें से 5% Reliance में देगा। If they are seeing that Tata है 6%, they will invest in the 6%. Means उस इंडेक्स में जिस प्रोपोर्शन में जो भी कंपनी जितना भी है वो लोग क्या करेगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा, राइट। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस? एक्टिवली मैनेजमेंट में क्या होगा कि वो खुद से स्टॉक पिक करेगा, दे आर नॉट फॉलोइंग एनीबॉडी एंड दे आर ट्राइंग टू बीट आउट परफॉर्म द मार्केट इंडेक्स। ओके, देयर इज अ हायर एक्सपेंशन रेशियो आल्सो एंड द पैसिव फंड व्हाट विल हैपन, they will just mirror the Sensex, mirror the index, nothing else. So that is what they have done. Then is that portfolio is predetermined by the index. मतलब portfolio जो भी होगा वो index में जो हो रहा है उसका portfolio भी same ही होगा, ठीक है। So that is what. If you look for the next slide, that is a large cap. मैंने जो भी बोला large cap में 80% in the top 100 companies में invest करना पड़ेगा, उसके बाद आप कहाँ पे इन्वेस्ट करो, 20% का आपका छूट है। तो व्हाई दिस सेबी मेड दिस रूल्स बिफोर 2020, जो म्यूचुअल फंड्स है ना वो लोग क्या कर रहे थे कि लार्ज कैप के बोल के स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा है बट देयर इज आल्सो रिस्क इज हायर। सो मैंने बोला ना सेबी बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो उसने क्या किया, ये कैप लगा दिया कि आपको 80% में आप इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा and other 20 you can invest other. So that is a flexi cap also. So you just go and read this. I already explained that, and this is very important slide for you. You have to, I think you needs to be make note from this, because question definitely that in the exam the question will come from this. Next is the liquid fund, corporate bond fund and credit risk fund. Liquid fund में होता है कि high liquidity मिल जाता है आपको। High liquidity means इसमें जो भी इसका जो इंस्ट्रूमेंट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है दैट इज
maturity up to 91 days. That means the instrument, the securities will be maturity in 91 days. So this mutual fund can deliver more and more liquidity, right? There is the corporate bond fund. Corporate bond fund में क्या होता है? A plus 80% they are investing on the A plus and above rated corporate bonds. Means आपका जैसा होता है ना, आपका सिविल स्कोर, आपका कितना डेप्ट का कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे से लोन पे किए, तो उसमें से आपका आता है कि सिविल नंबर, सिविल स्कोर. ऐसे कंपनी में होता है कि उनका रेटिंग होता है, रेटिंग एजेंसी से दे आर गिविंग द रेटिंग. सो इन द कॉर्पोरेट fund, what they will do, they are investing on those companies loan or bonds or debenture that has A plus. उसका जो ग्रेड है A plus अच्छा ग्रेड होता है, तो A plus में उसको 80% इन्वेस्ट करना है. दैट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड. एंड दिस अ क्रेडिट रिस्क फंड्स. बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम रिस्क. मींस जो A plus से नीचे का जो नीचे का रैंक है रेटिंग में, क्रेडिट लोन और डेप्ट पेमेंट करने में, उसका रैंक होता है AA. तो दिस फंड विल इन्वेस्टिंग इन दोस कंपनीज वेयर इसमें रिटर्न्स आता है. देन इज द रिटायरमेंट फंड. दैट्स अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, लाइफ गोल सबका जो भी होता है, दैट इज द ओके. नेक्स्ट रिटायरमेंट फंड एंड द चिल्ड्रन फंड. इसमें क्या होगा कि लॉक इन पीरियड है, 5 साल का होता है, रिटायरमेंट एज होता है, और इसमें जो भी पहले आएगा उसमें आपको लिक्विडिटी मिल जाएगा, आप यू कैन सेल दैट. एंड चिल्ड्रन फंड में ऐसा ही होता है, लॉक इन ईयर 5 years until the children reaches the majority age, whichever is earlier. इसमें भी ऐसा होता है, अगर आपको 5 साल से जो भी अगर पहले होगा 5 साल, और आपका चिल्ड्रन का अगर मेजोरिटी एज मींस 18 years अगर हो जाएगा, तो उसमें आपको जो भी पहले होगा, that day you can sell or buy the things. You can make that liquidate. Next is the exchange traded fund, ESG funds, quant funds, and specialized investment funds. The ETF is the passive fund that trade like stocks on exchange, offering intraday liquidity and pricing. What is that? ETF क्या करता है ना कि एक लाइक गोल्ड का जो प्राइस है वो प्राइस को पुल कर लेता है, एंड गोल्ड का जो भी है, गोल्ड का अगर 90% ये क्या करता है, गोल्ड का जो भी प्राइस है गोल्ड को खरीद लेता है, एंड उसके बेसिस पे ये लोग मार्केट पे ट्रेड होता है. एंड दैट इज इफ दैट इज फॉर द स्टॉक, दे विल बाय द स्टॉक, एंड उसके बेसिस पे मार्केट पे ट्रेड होगा. दैट इज ETF फंड. And you can, if you understand the complex, that is a little bit complex for you, I think. And if you understand that, how the ETF works, you can comment it down. I will make a video. That's the ESG fund. ESG means economic, social and governance. अभी ना कंपनीज को बहुत सारे बेनिफिट मिलता है by the ESG. If they are maintaining the ESG, then ये सब कंपनीज को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, and that is उसमें टैक्स में कुछ बेनिफिट्स मिल जाएगा, बहुत सारी चीजों में बेनिफिट मिलता है. सो ये सब फंड उस सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो ESG में अच्छा काम कर रहा है. ओके. देयर इज अ क्वांट फंड्स. ये बहुत ही आपका बोल सकते हैं कंप्यूटर एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसका मैथमेटिकल ले जाता है कि कभी कौन सा कंपनी प्रॉफिट करेगा. बहुत सारे एल्गोरिथम है, मॉडल है, AI बोल सकते हो आप. इस मॉडल्स के ऊपर बहुत हाई ट्रेडिंग रेशियो होता है. इफ यू लुकिंग फॉर द इसका टर्नओवर रेशियो देखोगे तो भी बहुत हाई होगा. देन इज द स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स. A few category for high ticket investment for advanced strategies like long short equity, bridging the gap between mutual fund and PMS. इसमें क्या होता है, हाई टिकट में इन्वेस्टमेंट करता है, ये रिटेल करना नहीं है, सो इसमें बहुत हाई करना पड़ता है. इसमें इसका सिलेबस है ना, बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा दिया है आपको. उन सभी चीज को मतलब उतना ध्यान से नहीं पड़ेगा तो भी चलेगा, बिकॉज दैट इज नॉट टफ लाइक दिस. ओके. इन सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा लाइक दैट इज ESG fund, that is special investment fund, that is nothing. Okay, ये reality में ये सब नहीं होता उतना. Okay, now look this. That is the I am talking. I will tell you the growth rate. This is the growth rate of the mutual fund, asset management in asset management. Okay, I told that in the starting of the video I will show you something, and that is what is. Okay. Sorry, I am not visible. Okay, in the starting of the video, I told you that I will show you something, that is the compounded annual growth rate. And if you look further, this March 2015 to March 2025, that is the 18.82%. That is the rate of CAGR. Okay, इससे इतना एसेट अंडर मैनेजमेंट पे ग्रोथ हुआ है. हमारा जो भी टोटल अंडर मैनेजमेंट है ये 18.82% मतलब कंपाउंडेड रिटर्न मतलब ईयर बाय ईयर.
मीन्स इस साल में अगर 100 है वो अगले साल में हो जाएगा 118 रुपया, उसके बाद 118 रुपये का ऊपर 18.2% का इंटरेस्ट बैठेगा। तो दिस इज हाउ द म्यूचुअल, इसका जो कंप्यूटर कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है वो काम करता है, CAGR जिसको हम बोलते हैं। And if you look for this graph also down, that bottom line graph, that also says that how much investor account is created during this. And one thing is there, after the COVID, after the lockdown, you will, or after the digitalization, especially after the digitalization, that is more people are looking for the stock market, right? So this is what is a growth rate, and there is something for you, a major development fueling industry, ये आपको रीड कर लेना है, इसमें कुछ भी नहीं है इसमें। So this is how the mutual fund work and the model for every route and the an unstoppable force, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट रीडिंग कर लेना, अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, दैट इज व्हाट आवर नोट्स। ओके, नोट्स से पहले एक छोटा सा चीज आपको दे दूं, टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस विल हेल्प यू। ओके, ये डिस्प्ले होगा, या दैट इज इन डिस्प्ले। ये अब देख लो इसको थोड़ा, इसमें क्या है ना, अब हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसका एक शॉर्ट नोट टाइप का है, तो ये आप क्या कर सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा। बिफोर द एग्जाम इफ यू हैव टू क्विक रिकैप, दैट पिक्चर विल हेल्प यू लिटिल बिट, आई थिंक दैट विल हेल्प यू। क्लोजिंग डेट, ओपन डेट, क्लोजिंग डेट में इसमें दरवाजा खुला है तो आपको इससे मिल जाएगा थोड़ा बहुत अंदाजा, दरवाजा बंद है यहाँ पे। सो दैट इज व्हाट, कोई का फंड होता है, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, थोड़ा बहुत का सब कुछ है। और इफ यू आर लुकिंग फॉर द फंड्स, हाउ मच टाइप्स ऑफ फंड्स इज देयर, I will say in your notes there is a lot of funds. I will show you later. Show you again also in our notes. But you have to take care of 5 or 6 names. That is equity funds का जो भी है, debt का जो भी है, hybrid का जो भी है, and the solution में 2 है, and ELSS fund and the ETF fund. ये सब अगर ले लोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे फंड है आपका सिलेबस में। That is not important and that is not really working in the real life. Okay? उसमें थ्योरी का घुसा दिया है लोग ने। Okay, next is this. Okay, we have to remove. Yeah. Now see, this is the notes you have. I think it is showable. Yeah, showable. तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो भी है देख लो, रोल ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोगों ने लिखा और क्या क्या रोल होता है, बाई बिल्डिंग देयर वेल्थ, इन्वेस्टिंग इन द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द सिक्योरिटी मार्केट, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैं जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना वो आपको बोल दूंगा, लाइक आपको ये सब रखना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज वन नाइट फंड, what is equity fund, what is hybrid fund, long term fund, okay, you have to just master on this। investment policies क्या होता है, units क्या होता है, the investment that the investor makes in a scheme translated in a certain number of units in the scheme। so ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को, प्लीज go through with this। रिकॉर्डिंग एक्सपेंस क्या है, नेट एसेट वैल्यू, फेस वैल्यू, यूनिट कैपिटल, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिट्स का कैलकुलेशन आ सकता है, आपका यूनिट कैपिटल का कैलकुलेशन आएगा, नैव का आएगा। NAV is very important, इसको आप स्टार मार्क्स दे लो। NAV is very important for you, you have to go through with this। next to mark process, this is another important thing, you can make it double star। and then is professional management advantages of mutual fund, इसमें से economy of scale, इस concept basic very good। affordable portfolio diversification, ये सब आपको बहुत डिटेल में हम लोगों ने लिखा है, प्लीज गो थ्रू विद दिस। ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी, टैक्स डिफरल मिल जाता है आपको, टैक्स बेनिफिट, रेगुलेटरी कंफर्ट, ये सब बोला है हमने, लिमिटेशन भी बोला है। क्लासिफिकेशन बाय द स्ट्रक्चर, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, बाय द स्ट्रक्चर द म्यूचुअल फंड इज डिवाइडेड बाय 2 way, one is open ended fund, another is closed ended fund। okay, by the management mutual fund is divided into 2, passive and active। so others, all the things are there, they all are come into this। आपको क्या होगा, by the structure and by the management of the portfolio। okay, then is the by the investment universe, that there is these things। okay, इक्विटी का 11 सब कैटेगरीज है, ये सब आपको जाके यहाँ पर मिल जाएगा। इक्विटी में देख लो, ये प्रोपोर्शनेट आपको पढ़ना, ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनेट है ना 25 ऑफ टोटल एसेट, ये सब आपको देखना है। लार्ज कैप पे क्या होता है, 80% ऑफ टोटल एसेट इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये सब आपको देखना है। यहाँ पर 35, ओके। मिड कैप का अगर देखोगे यहाँ पर, स्मॉल कैप पे भी आप जा लो 65%, ये सब आपको क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस ओनली। I am telling you the question will come from this and you have to go through with this। 65%,
वैल्यू कंट्री फंड में क्या होता है 65%, ये सब चीज आपको पढ़ना है। फोकस में सिर्फ 30 स्टॉक ले जाता है, मैंने मिस्टेक किया था, तो फोकस में क्या हुआ, सिर्फ 30 स्टॉक ही लिया जाएगा, ठीक है। मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सभी से लिया जाएगा, ओनली 30 स्टॉक। सेक्टर के क्या होता है, सेक्टर पे एक्सपोजर देख लो 80%, ओके। इक्विटी लिंक स्कीम्स का क्या था, 80% के 3 इयर्स का बेनिफिट मिल जाता है, ओके। So this is what you have, and that is another important chart. If you can go through with this, what is the definition of large cap, small cap, and mid cap? So this is all about for your this chapter. I think this video will help you a lot. If you didn't understand anything, I think if you have any confusion, please comment it down. We'll make a video. And one good advice for you guys is that please go with the description. There is this notes. Please go with this note, and there is a question bank. Please fill the question bank and find out what is your score. If you didn't find it, that will be a difficult thing for you. The exam will be very, very difficult. And one thing is that if you are going with uh, thinking that I will just pass the exam, that will not happen, because in the exam what will happen, that there is lot of conceptual question is there. So main thing is that you have to clear the concept. What is unit capital? What is unit? What is AUM? What is other things you have to calculate? You have to clear the concept, and the things I marks that you have to रखना पड़ेगा वो चीज 65%, 85%, इसमें आप क्या क्या कर लो, क्या समझोगे? तो there is no formula, you have to रखना पड़ेगा. By the time you will get that. And for the liquidity fund, सॉरी, जो डिवेंचर का डेप्ट का फंड है, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसा चीज है. यू हैव टू गो थ्रू विद द NISM वर्कबुक. NISM वर्कबुक में सब बहुत अच्छे से लिखा है. सो यू हैव टू गो विद दैट and you can make this very good. Okay, thank you, thanks for watching the video. I think that video will makes you happy, and you will understand all the things. And please let me know if you didn't understand anything. Please comment it down, and how much you scored in this particular exam, please comment it down. Thank you for watching.